नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर हम आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फर्स्ट पार्थ चटर्जी, सेकंड अनुव्रत मंडल, हु इज द नेक्स्ट, इस बारे में। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद है। एक है बीजेपी की तरफ से डॉक्टर मिस्टर दीप्त्याश्य जस, जो वेस्ट बंगाल बीजेपी का एक प्रवक्ता है, और दूसरा है पॉलिटिकल एनालिस्ट कम राइटर शिवम चौधरी। आप दोनों का हमारे शो में स्वागत है। वेलकम टू Uh, हमारे शो। just one correction. I am not a official spokesperson of BJP, though I am a post ओके holder, but I am not a official spokesperson. ओके ओके, सॉरी फॉर माय Yeah, मिस्टेक। no issue. तो पहले दीप्ताश्य सर से क्वेश्चन किया जाए। तो दीप्ताश्य सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अनुव्रत एंड पार्थ? सचमुच के पनिशमेंट कुछ होगा या दिलीप घोष जो बोल रहे हैं सेटिंग का थियोरी वही चल रहा है, क्या है? Now, see, first of all, what Dileep Ghosh has said, Dileep Ghosh ने जो बोला है, Dileep Ghosh has never said that it is a setting between a government to government. Okay, he has never said that. What he has said that there were some tainted officer in CBI who was having some setting with the corrupted people. Okay, now I don't have all those information, and I was not present at this program also where Dilipda has made this statement, so I don't know on what aspect he has said this or what are the information he is having with him. So on what ground he has said it, because CBI, ED, these are the agencies which is a very top agencies and work in a very confidential manner. So it is not a very easy thing to get the information out of CBI or ED on their planning. Okay. Now, if you look at the way they are conducting the investigation, you first of all for Partho, you have seen that they have recovered almost 70 crore of cash, and then there are a lot of they have identified lot of like benami properties like land, hotels, petrol pump, dumper that were carrying sand. So they have identified those properties for Partho, and they have like nabbed the all the person on whose name Partho has made these Benami properties like Arpita, Mona Lisa. So they are investigating in that way. So it as of now it seems that CBI and ED both are very serious in their investigation regarding Partha Chatterjee's case. Now, if you come to Anubrata Mondal's case, okay, now this is a very unique case which CBI is handling. Anubrata is a person who has kept 17 crore rupees as a fixed deposit in his daughter's name in a bank. Okay. Now see, there are some TMC spokesperson. They are saying that if it is in bank, then how it can be a black money. See, bank doesn't look for the money whether it is black or white. It is kept as a fixed deposit. When the fixed deposit will get matured, they will deduct the TDS and they will give the money to the person. So bank don't want to know the source of the person. If you see that CBI has investigated a local bank in Bolpur also. So Anubrata Mondal has pressurized that manager to transfer around 60 lakhs without any documentation, which was in his wife's name in a current account. And he has tried to force them to transfer those amount to Anubrata Mondal's account without any proper documentation. So CBI is going that deep. They have identified all the rice mills that Onubroto is running with a pseudo name, and he has put up some pseudo owner for those rice mills. They have recovered cars worth of crores from a rice mill, and also his bodyguard is nabbed. And if you see this investigation,
it is a very this cow smuggling and coal smuggling investigation is a very meticulous investigation CBI has done, because it has unearthed first in Kerala, in not in West Bengal, when in Kerala a BSF officer Matthew got arrested in the year 2017, I think, with a 12 crore cash. From there onwards, they have started the investigation. They have arrested the CBI commandant here in West Bengal. They have arrested couple of custom officer for coal scam. Uh, they have arrested a lot of ECL officers. Even the general managers are there also. So they are working very meticulously and collecting evidence one by one. And then it has reached to Anubrata Mondal. Okay. So it's as of now, if we talk of these two cases only, forget about coal scam, Bok Tui, and other like post poll violence, the others in investigation that CBI is having with them, which has not started yet. It seems very difficult for Onubroto and Partho to come out very early from the jail, and it will I the way it is going, I it seems that it will take at least 2 years or 3 years for them to cover to complete the investigation. And I don't think that court will allow bail to them unless this investigation is completed. सर आज से एक बात सुनाई दे रहा है कि कोर्ट को जज को भी धमकाया गया। This NDPS case is very common here. If you are suppose see, it is a judge, that is why it has came in a news. Even if you are a small time worker in BJP, you will get a NDPS case. If you are suppose if you are not even part of any political party, you have a land and someone want to encroach that land and you don't want to give up, then also you will get a NDPS case. Suppose you are a like candidate who has passed SSC in some sound is coming, who has passed SSC who has passed SSC in 2004, and you are fighting for your due, your the right position, you will get an NDPS case. So NDPS case is a solution in West Bengal to keep the opposition silent. Because see, these small time worker or the village people, they don't have that much economic strength to fight such cases. You will remember that one time Anubrata Mondal on camera, he has said to the police officer that give a NDPS case to that lady. That lady was actually Sangita Chakraborty. She is a human rights. She runs a human rights NGO. And since she was causing some problem for Anubrata, so Anubrata on camera said that give a NDPS case to that lady. So this is the situation here. So this is nothing astonishing for us that the judge gets a threat on NDPS case. शिवम भाई, आपको क्या लगता है ये जो एसएससी स्कैम या कैटल मैगनी स्कैम का जो ये दोनों को जो पकड़ा गया, पार्थ चैटर्जी या अनुब्रत मंडल को, ये दो ही इसके लिए दोषी है सिर्फ, या इसके ऊपर भी कोई है? किसको हाथ है? जी, सबसे पहले तो ईडी और सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को नैग किया, उसके बाद फिर अनुब्रत मंडल को नैग किया, दोनों अलग अलग केस में। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल ने ये इंडिपेंडेंटली किया है, क्योंकि देखिए हायरार्की इस तरीके से चलती है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे सब चीजों को गवर्न करते हैं। वो एपी सेंटर है इस पूरे एक नेक्सस के सिंडिकेट के। तो ये सब जो लोग हैं, पार्थ चटर्जी या अनुब्रता और ये इसके जैसे और लोग जो आने वाले हैं भविष्य में सीबीआई और ईडी के रडार पर, दे आर जस्ट द पॉन्स। वो काम कर रहे हैं उस परिवार के लिए, ममता बनर्जी के लिए और उनके भतीजे के लिए। तो ये उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, अलग अलग उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर एक को एक डिपार्टमेंट उन्होंने बांटा हुआ है ममता बनर्जी ने, कि आप यहाँ पे ये मतलब ये सेगमेंट आपका है, इसमें आप वसूली कीजिए, सेगमेंट आपका है, इसमें आप वसूली कीजिए। हर एक को एक पाई में एक हिस्सा दिया हुआ है।
ताकि वो उनके प्रति लॉयल रहें, और फिर जिस तरीके से पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है और अगले 5 साल भी मुझे लगता है कि उसी तरीके से सत्ता चलने वाली है, तो उसी को, उसके लिए ये फुट सोल्जर्स हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पार्था चैटर्जी और अनुब्रता मंडल, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये 2 नाम इस लिस्ट में रहने वाले हैं, इस लिस्ट में आगे भी बहुत सारे नाम जाने वाले हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार जब भी किसी पॉलिटिकल नेता के ऊपर इस तरह का रेड पड़ती है, कोई एक्शन होता है, तो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आ जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ईडी है वो आज के टाइम में लगभग 5000 से ऊपर केसेस ईडी हैंडल कर दिए, जिसमें से ओनली 150 केसेस ऐसे हैं जो किसी पॉलिटिकल फिगर को वो इन्वॉल्व करती है। तो वो 1% भी नहीं बैठता, 1% के आसपास या कुछ ऐसा फिगर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और दूसरी चीज, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हैं? कोई केस आपके फाइल होता है, तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और सब चीजें आपके पास लीगल है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि बैंक में उन्होंने 17 करोड़ डाले और वो कहने लगे कि वो तो लीगल है। बैंक इज नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ये तय करे कि पैसा लीगल है इलीगल है। वो सिर्फ पैसा जमा करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, उसका सिर्फ ये काम है। तो ये दिखाता है कि वो कितने नाइव हैं, वो कितने मतलब अनएजुकेटेड हैं, और उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत जल्दी फंस भी रहे हैं। तो और वेस्ट बंगाल इज लाइक, वो अब ऐसा लगता है कि अगर मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल को देखता हूँ, यहाँ वहाँ की खबरों को पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट नहीं है, वो किसी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहा है, वो टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहा है। तो उस तरीके से वहां चीजें चल रही है। और 2000 अभी 19 के चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा एक ग्राउंड कवर किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पब्लिक वहां पे टीएमसी और उनके गुंडों से परेशान है। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे रह गई, थोड़ा डिले उन्होंने कर दिया चीजों को हैंडल करने में। इसकी वजह से 2024 में उन्हें नुकसान रहने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर वहां कवर करना है, तो जो ये इंसिडेंट जो सीबीआई और ईडी उनके ऊपर एक्शन कर रही है, तो उन्हें उसे भुनाना पड़ेगा, उसके ऊपर पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। क्योंकि ये एक एज अ ऑल्टरनेटिव आए थे कम्युनिस्ट के, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये कम्युनिस्ट से भी ज्यादा खराब स्थिति आज उन्होंने बंगाल के अंदर उत्पन्न कर दी है। बंगाल इज लाइक अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ बांग्लादेश वर्किंग इन इंडिया। तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से मोबिलाइज करके इन चीजों को वहां पे जाके भुनाना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, और एक जो सेंटीमेंट है, जो अंडर करंट है, उसको अपने पक्ष में करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टेट में एक बड़ी लीडरशिप की जरूरत है, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है या और कोई है। आपको एक बड़े मास लीडर की जरूरत है, बीजेपी को उस तरह के एक लीडर को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो एक तरह का शोषण है पश्चिम बंगाल की जनता के साथ इस सरकार में हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। जी। दीप्ता One more point यस I would like to add here. If you see a difference between Partho and Anubrata, Mamata Banerjee was very quick to get rid of Partho. Okay, but for Anubrata, she is fighting like tooth and nail. Because why is the difference? Because Partho was only an accountant. He was only the keeper of the money. But Anubrata is the source of the money. Anubrata Mondal is the model of TMC rule, the model that TMC want to implement all over West Bengal. It is not only Anubrata, it is Anubrata in Birbhum, Gautam Dev and Udayan Guha in North Bengal, Rabindranath Ghosh in Kuch Bihar, Jyotipriya Mollik in Basirat and North 24 Pargana. It is a model that they want to roll out. So Anubrata was the icon of that model, who is like in open meeting, he is saying like police ko bomb mar do. Give NDPS, he is openly he is saying that give NDPS case to this person. That is the TMC model of rule in West Bengal. And we are fighting against that model. So that's why on Mamata Banerjee is fighting tooth and nail for Anubrata, and they are like coming out on road and saying that ED and CBI is working by political vendetta. तो इसके सीबीआई और ईडी के रडार में इसके बाद कौन है लगता है शिवम भाई? ये दोनों आपको से दोनों से एक सेम क्वेश्चन है, तो शिवम भाई पहले बताइए इसके बाद कौन है दीपदास्य जी लाइन में, कौन बताइए दिख पहले। रहे? अच्छा, दीपक सवाल जी पहले। सवाल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कौन है,
सवाल ये होना चाहिए कि कौन नहीं है, क्योंकि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हाथ डालोगे, आप फायर ब्रिगेड का रिक्रूटमेंट, उसमें भी स्कैम। आप अभी आप देखोगे पेपर में बहुत बार आ चुका है कि रेशन कार्ड, almost 1 crore ration card got disabled or cancelled because those are forged ration card. Okay, if you take college service commission, there is a people are saying there is a scam. So whatever department you look for, if it is a disaster relief department, CAG Mamta Banerjee was hell bent to not to do a CAG audit for Amphan, and she went up to Supreme Court for not doing the CAG audit. Okay, if you take up Manrega, there is a scam. If you take up Awas Yojana, there is a scam. So आप ये पूछिए कि कौन नहीं है, टॉप टू बॉटम कौन नहीं है। ये जो आप देखते हो, ये भादु शेख, अनारुल शेख, these are like they are foot soldiers who are the agents. Okay, and that's why, like, now say Bhadu Sheikh is earning more, he is managing a bigger area than Anarul, so Anarul wants to kill him. It is like that. So अब ये पूछिए कि कौन नहीं है, शायद जेल में जगह कम पड़ जाएगा। शिवम भाई, आपका क्या राय है इस बारे में? अभी जैसे दीपतास्य जी ने बताया कि बहुत सारे स्कैम्स के उन्होंने नाम जोड़े, मैं इसमें कह देता हूँ अगर आधार को वोटर आईडी से जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोर्ज्ड जो वोटर आईडीज होंगी शायद वेस्ट बंगाल में से निकले, कि क्योंकि इस तरीके का उन्होंने एक सिस्टम उन्होंने खुद का एक डेवलप कर लिया। और दीपतास्य जी ने सही कहा है कि वो अब पेड़ जो टीएमसी का जो पेड़ है ना वो इतना बड़ा हो गया, वो खुद के वजन में गिर जाएगा, कि एक नेता को दूसरे नेता से कहीं ना कहीं जेलेसी होगी कि ये ज्यादा पैसा कमा रहा है या ज्यादा ममता बनर्जी के करीब जा रहा है या उनकी ज्यादा गुड बुक में है। तो इस तरह की स्थितियां भी वहां डेवलप होने वाली हैं। तो और मुझे तो लगता है कि जो दो नेता हैं इसमें भी कहीं ना कहीं शायद, मतलब मुझे ऐसा कहीं से मिल रहा है कि भतीजे की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि दीदी को थोड़ा परेशान किया जाए ताकि वो उनकी पार्टी के ऊपर पकड़ मजबूत हो। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे No, ऐसा no, लगता है। that is all drama. That is all drama. That is all drama. जी, तो Mamta मतलब has मुझे भी done that kind of drama earlier also. Now again she is. See, अभी जो सबसे बड़ा 3 स्कैम है वेस्ट बंगाल में, वो अभी तक सामने आया ही नहीं है। First is the lottery scam, DL lottery. That is a scam. It is a way to make the black money white. You remember that earlier Anubrata has won 1 crore in DL lottery. Okay. Then the another scam is the women trafficking scam, and third scam will be the organ trafficking scam. Organs are getting trafficked from West Bengal to Bangladesh. That will be, these are the three biggest scam that has not unearthed yet, and people are not talking about it yet because on ground, or the investigation that is going on, that is not visible in media. Okay, so I'm telling you that uh, the total worth of this all this scam is more than 1 lakh crore. It is the biggest scam in India after independence. दिप्तेश जी, टीएमसी तो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी का एक विंग है, क्योंकि हमने भी देखा है टीवी पे शुभेंदु अधिकारी को नाटक में वीडियो में देखा है पैसे लेते हुए। वो बोल रहा है कि शुभेंदु के लिए के पीछे क्यों ईडी और सीबी नहीं लगे हैं। आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, ईडी सीबीआई अगर बीजेपी के विंग है तो सीआईडी क्या टीएमसी का विंग है? अभी कल ही हाई कोर्ट में एक केस में सीआईडी को हाई कोर्ट ने बुरी तरीके से, दे हैव स्कोल्डेड देम वेरी बैडली, द सीआईडी टीम, that they were inquiring against a central government employee and they have not taken permission from the central government. This is the situation. They have forgot the basic law also in revenge ke nase mein. Okay, now see, now if you come to Subhendu Adhikari's case for Narda. Okay, first of all, has Subhendu Adhikari got cleared of this case? Has the case been withdrawn against him? No, right? Now, have CBI asked Kakoli Ghosh Dostidar,
Sogato Rai, Apurupa Poddar to appear? No. Why? Because at that time Subhendu Adhikari was a member of parliament, so was Sogato Rai, Apurupa Poddar and Kakuli Ghosh Dostidar. And the matter is due with the Lok Sabha speaker. So, like to arrest the Bidhan Sabha legislative member, assembly member, you need to get the permission from the governor. That they got. Okay. So similar proceedings is pending with the Lok Sabha speakers. Now you see what Bobby Hakim is saying, that yes, I have taken the money, but I have given a receipt to the Matthew Samuel for that money because it was money taken for party fund. Same is the comment of Aparupa Poddar also, the MP from Arambagh. Okay. So if that is the case, okay, if they can show the slip against which they have taken the money in the party fund, then it is not a scam, because getting donation for party fund is not a scam. But I will tell you what is political vendetta. If you remember Bimal Gurung in 2017 2018, he had a fallout with TMC. There was a firing happened and one police officer died in Darjeeling. Police opened fire in different uh, rally. Almost 18 people died in Darjeeling. Mamta government has put 71 cases against Bimal Gurung. Now Bimal Gurung is with TMC. He is roaming freely. What about those cases? Why Bimal Gurung is not arrested? He was charged for a murder of a police officer. He was charged with UAPA. He was not arrested. Second case, Chhatradhar Mahato. West Bengal government, West Bengal government CID arrested Chhatradhar Mahato in UAPA cases. Then they released him before 2021 election, and they made Chhatradhar Mahato as a party post holder, party secretary before 2021. Chhatradhar Mahato worked for TMC in the 2021 election. So why there was the UAPA case? Third is Kunal Ghosh. Kunal Ghosh was arrested in Sarda scam. He was not arrested by CBI or ED. He was arrested by West Bengal police led by Rajiv Kumar and Arnab Ghosh. And he was in jail for 3.5 years. He tried to commit suicide. Now, where is Kunal Ghosh? He is the official spokesperson of TMC. So those were the political vendetta. It is not the CBI and ED who is running political vendetta. CBI and ED, they are a highly prestigious agency in our country. They are an independent body. The CBI chief is being selected by the Lok Sabha opposition speaker, prime minister, and by president himself or herself now. So you cannot say like those institutes cannot be used so easily for political vendetta. Like I will give you a case like the Congress UPA in UPA time. Congress has tried to convict Narendra Modi in Gujarat riot case. CBI has called Modi for and they have interrogated him for 11 hours, 12 hours, 10 hours, but they could not prove anything. And CBI and ED, they did not agree to Sonia Gandhi's or Congress proposal on fabricating evidence against Narendra Modi. So these are very highly reputable agency. You cannot use this agency such easily for political vendetta. It don't work like that. शिवम भाई, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो सब चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि सीबीआई सिर्फ सेंटर की सुन रहा है। और मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी के न पक्ष में न विरोध में। तो सबसे पहला सवाल पूछता हूँ, टीएमसी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने नारदा केस में पैसा लिया है, तो उस समय शुभेंदु अधिकारी किसकी पार्टी में, वो किस पार्टी का जो ऑफिस था वो होल्ड कर रहे थे? इसका मतलब टीएमसी उस स्कैम में इन्वॉल्व है, अगर टीएमसी ये बात कह रही है। और दूसरी चीज, आप पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी को 9-9 घंटे तक आपने सीबीआई और उसने अपने
बैठाया, कभी मोदी ने ये नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, कभी मोदी ने ये नहीं कहा कि सीबीआई का ऑफिस भेज लीजिए, कभी ये नहीं कहा कि ईडी का ऑफिस भेज लीजिए। और सीबीआई और ईडी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपको इससे पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संजय राउत वाला केस है उसमें सीबीआई को कहा कि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। तो यानी कि अगर सीबीआई और ईडी एजेंसी की बात करें तो वो कितनी कॉम्पिटेंट है तो सुप्रीम कोर्ट बता देगा। और आज की टाइम में सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, आज हम बैठ के जब हम वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो हम बात करते हैं यूपी की, तो हम कहते हैं कि 5 साल में वहाँ जीडीपी डबल हो गई है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां डबल हो गई। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम कहते हैं सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग रहा है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं हम कहते हैं सबसे बड़ा कैटल स्मगलिंग का रैकेट वहां पे चल रहा है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से देश किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम बंगाल किस दिशा में जा रहा है। तो ये साफ तरीके से पता चलता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी किस तरीके से एक फंक्शन कर रही है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से सब चीजों को डिस्क्राइब किया कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन एरिया को होल्ड करता है। बाकायदा वहां पे टेरिटरियां बांटी हुई है कि आपका जो मैं बात कह रहा था कि हर एक को अपना एरिया डिमार्क कर दिया गया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। उसी तरीके से जैसे सिंडिकेट काम करता है, एक परफेक्ट सिंडिकेट। अगर आपको एक केस स्टडी करनी हो कि एक सिंडिकेट कैसे काम करता है तो आप आज की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आप किसी भी आईआईएम या किसी भी संस्थान में पढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। तो आप पूरे एक देश को और पश्चिम बंगाल को एक अलग रख लीजिए, एक बहुत ही क्लियर कट एक लाइन है जो दोनों को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में दिखाती है जाते हुए। और आने वाले समय में बाकी जनता को भी और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा और मीडिया का उसमें बहुत अहम रोल है। आप जैसे चैनलों का बहुत अहम रोल है कि उस चीज को ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि बाहर तक और प्रदेशों में भी अच्छे से प्रदर्शित किया जाए ताकि पता लगे कि क्योंकि ममता बनर्जी तो ये मान के चल रही है कि 2024 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। शी इज द कंटेंडर फॉर द सीएम पीएम पोस्ट इन 2024। उन्होंने आज ही कह दिया कि हम राहुल गांधी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि राज्य से बाहर जाया जाए। उसमें पीके जैसे लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं कि भतीजा राज्य संभाले और दीदी देश संभाले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके बाद स्थितियां और खराब ही होती जा रही। जी अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपने नेटफ्लिक्स में नार्कोस सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो नार्कोस सीरीज हार मान जाएगा ये वेस्ट बंगाल का स्कैम से। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये कैटल स्मगलिंग। व्हाट ममता बनर्जी इज सेइंग that how come the cattle are coming from UP and Haryana, why you are not stopping it there? Yes, cattle are coming from UP and Haryana, but is it coming for smuggling or coming for dairy? Cattle are coming from UP and Haryana for dairy, because those are the cows. Because the West Bengal breed of the cow, they can't produce more than 4 liter, 5 liters, or maximum 6 liters of milk in a day. But the cow that we get, cattle we get from Haryana or UP, they can produce 30 to 35 liter milk in a day. Now, to get that 30 to 35 liter milk in a day, the dairy owners, they use lot of medicine for them. So after 1 year, those cow cannot produce milk anymore. Okay. So then they want to get rid of those cow and they want to bring in new one. That time they sell those cow, and then those cow are getting smuggled in Bangladesh. Why those cow is getting smuggled in Bangladesh? Because if you see the law of India, even in West Bengal, the cow meat, producing cow meat is illegal. You can butcher a cow only when it is a dead, as per the law in West Bengal. And there are different laws in other part of India which bans the butchering of cow when it is living, or some in some states like UP or some states it bans it totally. Okay, so you can you can export uh, bhais meat, you can export ox meat legally, but the demand in Bangladesh is for cow meat, the beef, that you cannot export legally. And that's why this cow which is
producing milk for 1 year every day, 30 liter, 35 liter, and after that it cannot produce that much milk. The dairy owner sells them in the that what you call in Bengali, you call it as a heart. That is the market, selling market. They put it on auction. In auction, the agents they buy it and then they send it to Bangladesh through a route. The route, one route is from Birbhum to Murshidabad to Bangladesh. The same route which was used for smuggle the bomb. If you remember the Khagragor incident, from Bardhaman to Birbhum to Murshidabad, then to Bangladesh. Another route is via Nadia to Bangladesh or Basirhat to Bangladesh. Same is there is some route in Kuch Bihar in North Bengal. So now what, after so many arrests in BSF, like BSF commandant got arrested, and so now those routes are closed. So that's why there is a reduction in cow smuggling, a huge reduction in cow smuggling. And if you see the video at the time of Eid in Bangladesh, you will see people are there saying that this year cow is very high cost. We are not being able to buy it. That is because of this stop, because of this restriction in smuggling. Now you see another thing, TMC is saying that why BSF is not stopping the smuggling, why they are not being able to stop it. You need to understand BSF is an authority who cannot arrest anyone. Their job is to safeguard the border, so they can detain a person who is involved in some illegal activities in the border area. They can detain that person, they cannot arrest him. Once they detain it, they will submit him to the local police, and then it is local police responsibility to make a case and file a charge sheet and make sure that person is put behind the bar. But my question is local police doing his duty properly? No. Whenever BSF will detain a person, local and put him, hand him over to the local police, the local TMC leader will go there and he will get that person released. There is a name, Barik Biswas from Bosirhat. He always used to roam with 70 bodyguards, 70. Okay, so you can, maybe I compared it with narcos earlier. I don't think that, I think we have lost Basuda. So I don't think that Pablo Escobar was even roaming with 70 bodyguards. So that was the stature of this person, Barik Biswas. And he was the steering, he was executing this cow smuggling racket. Now he is also arrested under CID. It was not actually arrest, it was a surrender to CID to save him from the CBI arrest. और सर जैसे आपने अभी कहा कि जो बीएसएफ है उसे अथॉरिटी नहीं है टू अरेस्ट, दे कैन डिटेन ओनली। जब केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का एक जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया था कि वो 50 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो विरोध करने वाले थे वो ममता बनर्जी और पंजाब की सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने ही विरोध किया था। तो क्यों विरोध किया था? अगर उन्हें ये लगता है कि हम कुछ गलत नहीं है, सब चीजें सही चल रही हैं, वो तो है भी तो इंडिया की एक एजेंसी है, तो और उसके पास कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी भी नहीं है चीजों को माइक्रो मैनेज करने के लिए। लेकिन उन्हें पता है कि वो जब अंदर तक आएंगे तो ज्यादा अच्छे से वो कॉम्बिंग कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ वर्किंग है, वो लिमिटेड हो जाएगा, वो 50 किलोमीटर अंदर तक चला जाएगा। उसकी वजह से जो उनके पास एक एडवांटेज है बॉर्डर के पास काम करने का, वो एडवांटेज चला जाएगा, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगी। तो इसी कारण से उन्हें डर था। यूपी का बॉर्डर लगता है, यूपी का बॉर्डर नेपाल से लगता है, यूपी को कोई दिक्कत नहीं हुई और राज्यों को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब को ही, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ड्रग्स वहां से आता है, और या फिर कैटल स्मगलिंग वेस्ट बंगाल में होती है, तो वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा दिक्कत। दो ही राज्य थे जिन्होंने मेन रूप से उसके ऊपर बात उठाई। जी सर। आपको आपको मैं ऐसा भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि ऑन सेम इंसिडेंट there was an incident in Coach Bihar where BSF has opened fire and 3 smugglers died. Okay. Now the newspaper in West Bengal saying that
they are Indian citizen and their name is ABC. For example, their name is ABC. But on the same incident, the newspaper in Bangladesh is saying they are citizen of Bangladesh and their name is TEF. So this is the situation. तो सर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है कि क्योंकि आज के टाइम में No, जब no, वेस्ट बंगाल because no, लगभग बांग्लादेशी हो चुका है I believe no, it is not like that. So I believe that एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। those three part were Bangladesh citizen only. So what Bangladesh news agency has reported, it is the truth. The the report that has been published in West Bengal newspaper was politically motivated. So this is the situation. I'm telling you, this is how like things are going on here. So now, see, if you see that it is Bangladesh, yes, there are like forces who are trying to make it Bangladesh and part of Greater Bangladesh for last 50 years. Okay, but then there are the Bengali Hindus. Okay, you need to think of Bengali Hindus' tenacity and energy. They have been become refugee time and again. 47, 50, 65, 71, time and again they have been become refugee, and still they have not forgot their religion. They put their religion, their identity above all, and that's why they become refugee. They could have forgot about their identity and they could have live in Bangladesh happily ever after, but they did not do that. So it will not be so easy for those forces to make West Bengal Bangladesh. They will have to fight a lot battle to do so, and they will not be able to win the battle. तो ये जो सीबीआई और ईडी का जो ओवर एक्टिवनेस देख रहे हैं कि एक 2024 के लिए हो रहा है दीप्ताक्ष जी? No, no, because this over, it is not overactiveness. It is now things are falling in places. They are closing in the investigation. See, this cow smuggling case, Anubrata is being called from 2020. He has not appeared for 10 times. There is another minister, Molay Ghotok. He is being called from 2019. He has not appeared for 9 times. Abhishek Banerjee, he has put so many tantrums to appear before ED or CBI. So these cases are not started from like yesterday. These cases are running from 2017, 2018, 2019. So now it is their CBI or ED, they are closing in the cases. So it is not overactiveness. It is now we are going towards the end of the case. शिवम भाई, आपका क्या राय है इस बारे में? मैं भी नहीं मानता कि ओवर एक्टिवनेस है, क्योंकि हम सिर्फ इसे 2024 के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। इंडिया में तो हर समय, हर 6 महीने, हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो क्या इसलिए सीबीआई, ईडी या और एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें? अगर आप किसी एक कोई आपके ऊपर केस है और 5-5, 6-6 साल में आप बहुत सारे जो तारीखें हैं उस पे आप नहीं जा रहे हैं, या फिर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको नहीं डरना चाहिए। कोऑपरेट कौन नहीं करेगा? जिसके मन में कुछ ना कुछ चोर होगा या उसे कुछ छुपाना होगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि ये ओवर एक्टिवनेस है। मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि अब तक शायद सीबीआई को अपना पेस और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जल्दी से जल्दी चीजों को रैप अप किया जाएगा तो एजेंसी के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और एक जो जुडिशरी की और एजेंसियां और उनका एक नाम खराब हो गया है कि इस तरीके से काम करती हैं, अगर वो जल्दी से रैप अप करेंगी, जो अपने केस को फास्ट ट्रैक करेंगी और चीजों को मैनेज करेंगी जल्दी से, तो ये एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा भी बढ़ाएगा, चीजों को जो सिस्टम है उसको साफ करने में भी मदद करेगा। मैं तो कहता हूँ कि इसमें और तेजी आनी चाहिए। ये, और वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, किसी भी राज्य में कोई भी केस चल रहा हो, सब में चीजों को तेज करना चाहिए। अगर आप 5 साल 10 साल से उन्हें तारीखों पे बुलाते रहेंगे और 5 साल से इसी चीज में चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से आम जनता के लिए या देश के संविधान के प्रति न्याय है। तो चीजों को आपको तेज करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि सीबीआई अब सही डायरेक्शन में है। इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं कि 2014 के बाद एक जो टेक्टोनिक शिफ्ट आया है इस चीज में, वो ये आया है कि ईडी ने जो अपना वर्क फोर्स है वो 5 गुना बढ़ा दिया है। ईडी अपने यहाँ बहुत हायरिंग कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से करना चाहती है।
इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा जो नार्कोटिक जो ड्रग्स है वो जब्त हुए हैं, लगभग 3 लाख से 4 लाख करोड़ के आसपास ड्रग्स हम जब्त कर चुके हैं। ऐसी खबरें हमें पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए वो कितना ड्रग्स या कैटल उन्होंने सीज किया है। वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है। तो चीजों को फास्ट ट्रैक कर रही है एजेंसी, बहुत अच्छी खबर है और तेजी से मुझे लगता है कि करना चाहिए, और वो हर राज्य में करना चाहिए, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, हर जगह होना चाहिए। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन दीप्ताश्य जी से है, ये जो सीबीआई ईडी का ओवर एक्टिवनेस में हमारा स्टेट बीजेपी का कोई फायदा होने वाला है No, नेक्स्ट इलेक्शंस में? as I said, I will correct your question again. It is not overactiveness of CBI or ED. They are closing in the cases. Now see, CBI and ED is doing their work, and as Shivam bhai was saying earlier, that BJP has to play its own role. We need to do our own activity. We need to uh, bring in the things in front of the people, because these are very legal activities. So common people, it is sometimes it is very difficult for the common people to understand. So we need to explain it to them what is actually happening, why who is going in jail, and how they are getting uh, how the people are getting deprived because of all this scam. So BJP has its own role to play, and that we have to play. So CBI and ED, they are doing their work. BJP will do their work. We will see in 2024 whether we can increase our seat share from 2019, or whether we can recover the losses that we had after the due to the poll violence after 2021. That we will see. इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा हाँ कि जरूर। बीजेपी को एक चेंज लाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी में जो 2024 के लिए है। कि उन्होंने पिछली बार क्या किया, जो विधानसभा चुनाव थे, जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लोग टीएमसी से अपने यहाँ इंपोर्ट कर लिए थे और उन्हें टिकट दिया था। बाद में या तो वो एक बड़े स्तर पे वो हारे, या फिर उन्होंने प्रयास किया वापस पार्टी में जाने का। आपको अपने मूल कैडर, जो आपका जो कैडर है, जो बेस है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो वहां पे आज टीएमसी से लड़ रहा है ऑन ग्राउंड, जो टीएमसी को झेल रहा है, उसको आपको टिकट देना पड़ेगा, उसको आपको नरिश करना पड़ेगा। वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो या फिर पंचायत इलेक्शन हो या फिर असेंबली या लोकसभा इलेक्शन हो, आपको इंपोर्टेड जो कार्यकर्ता है उन पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। आज के टाइम में पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत जरूरत है। और इसमें मैं एक और चेंज लाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल देश से कल्चरली अलग है। पश्चिम अलग से मेरा मतलब पश्चिम बंगाल की खुद की एक कल्चर है। अगर आप वहां जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो शायद लोग उतने मोबिलाइज नहीं होंगे। आपको वहां माँ दुर्गा या उस तरीके से आपको हिंदू समाज को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को उससे ज्यादा जोड़ता है, बजाय जो काउ बेल्ट हम कहते हैं कि यूपी हरियाणा और इस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राम को मत लाइए और वो मत कीजिए, लेकिन आपको उस एरिया की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, एक स्ट्रेटेजी है, जो ज्योग्राफी है, आपको उसको समझना पड़ेगा, वहां के लोगों की एस्पिरेशंस को समझना पड़ेगा, वहां के लोगों की जरूरतों को समझना पड़ेगा। आप एक वन फिट मॉडल नहीं हर जगह अपना सकते। तो बीजेपी को भी बहुत सारी चेंज वहां पे लाने पड़ेंगे, एक अच्छा चेहरा उन्हें देना पड़ेगा। तो और मेरी तो बात यही है कि बीजेपी को हाँ थोड़े बहुत नट बोल्ट कसने पड़ेंगे, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, और बीजेपी रिकवर कर सकती है 2024 के लिए, लेकिन असेंबली इलेक्शन में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ बोलना है इस बारे में दीप्तस्य सर? No, I will not comment on this, because as a party man, I cannot disclose the thing which we are planning or which we are having in our mind. I cannot disclose that. But one thing I can assure all of you, BJP, the BJP Bengal BJP worker, they are working very hard, and they are working tirelessly day and night every day to make Bengal rise again. We will make Bengal as a Sonar Bangla again. थैंक यू दीप्ताश्य जी, थैंक यू शिवम भाई, आप दोनों मेरे शो पे आए, इतने टाइम दिए, इतने डिटेल्स में इस बारे में चर्चा की है। आप दोनों का धन्यवाद, और दर्शक आपका भी धन्यवाद। आप हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।